Hello students, the question is a coil of n turns is placed in a magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of the coil. B changes with time as B equals to B naught cos 2 pi by capital T small t, where capital T is the time period. The magnitude of EMF induced in the coil will be maximum at option A small t equals to n capital T by 8, option B small t equals to n capital T by 4, option C small t equals to n capital T by 2, and option D small t equals to n capital T. Here n equals to 1, 2, 3, 4 and so on. So the problem is based on the topic electromagnetic induction and in particular the use of the formula to calculate the induced EMF. So the induced EMF E is given by minus n d phi by dt, where E is the induced EMF, n is the number of turns of the coil, and d by dt is the derivative of this phi. Phi is the flux here. Now for this particular problem, it is given that the magnetic field is perpendicular to the coil. Suppose this is the coil, then the magnetic field is perpendicular to it. And we also know that the area vector is also perpendicular to the surface. So if this is the surface, then the area vector is also perpendicular to this particular surface. In this way, we can say that the area vector and the vector B both are having the same direction, the perpendicular direction to this coil. Or in other words, we can say that the angle between them is 0. So angle between B and A, angle between the magnetic field vector and the area vector, it is 0. And when it is 0, from the formula phi equals to B dot A or BA cos theta, we put the value of theta as 0. So we get this value as BA cos 0, and cos 0 is 1. So we get this value as BA into 1, which is equal to BA. So the flux is BA. So we put this value of flux here. So we get the expression as minus n d by dt of BA. Now the value of magnetic field is given by this expression. We put this expression here. So n is here a constant minus n, and area of the coil, it is also a constant. So we take it out from the differentiation, we pull it out from the differentiation because the constant quantities we can pull out. So d by dt of B, and we can put this value of B from this expression here. So minus na d by dt of B naught cos 2 pi by capital T small t. Now here this B naught is also a constant. So we can pull it out from the differentiation. So we get minus n a B naught minus n a B naught d by dt of cos 2 pi by capital T small t. Now in the next step, we have to find out the differentiation of this term. So it is like the expression y equals to cos n theta, so or nx, it is like this expression. So dy by dx is equal to minus sin nx multiplied by n. We use this rule here because there is a coefficient in front of x here, so we have to take differentiation twice. So we get this value is minus n sin nx. So we use this concept here because there is cos 2 pi by capital T into small t, not only cos t. If there is only cos t, then the differentiation is minus sin t, there is no problem, but there is a coefficient of t, so we have to take the differentiation again according to the rules of differentiation. So now after differentiating, we get this value E as minus n b naught a, and then d by dt of this becomes minus sin 2 pi by capital T small t, and this thing multiplied by 2 pi by capital T. Now this minus and this minus, they cancel out each other. So we get this expression as n b naught a multiplied by 2 pi by capital T, and then sine 2 pi by capital T into small t. We get this expression as this. Now we have to maximize the value of EMF according to the problem. So to maximize the EMF, we know that this term is constant, coefficient of sine
is the constant, n, b naught, a, 2 pi, t, all these terms are constant. The only variable terms is this. So we have to maximize this. And we know that sine is maximum and its maximum value is either plus or minus 1. And the value of sine becomes maximum at an angle of pi by 2, which is 90 degree. At 90 degree it becomes plus 1. Then it becomes 3 pi by 2. 3 pi by 2 means 270 degrees. So 270 degree comes here. So 270 degree, theta equals to 270 degrees, or we can say that 3 pi by 2. So then again the value 5 pi by 2, we goes again at this point, which is plus 1 value. Then again 7 pi by 2, we get this minus 1 value, and so on. So in this way we can say that when the angle is the odd multiple of pi by 2, sine is maximum. And to write the odd multiple of sine, we can write in a generalized manner as sine 2n minus 1 pi by 2. We can write this expression as sine 2n minus 1 pi by 2. This is a generalized form to write the expression when the angle is an odd multiple of pi by 2. So this value of sine 2 pi by capital T small t, this become equals to this sine 2 n minus 1 pi by 2. So we put this value of sine 2 pi by capital T into small t as equal to sine 2 n minus 1 pi by 2. So after comparing both sides we have sine, and we get this expression as 2 pi by t small t equals to 2 n minus 1 pi by 2. So we write down this value as 2 pi by capital T small t is equal to 2 n minus 1 into pi by 2. Now this pi cancels with this pi, and we have to find out the value of small t. So small t becomes 2 n minus 1 times capital T, and we cross multiply this 2 from this 2, so we get here 4. So small t becomes 2 n minus 1 capital T by 4. So this is the generalized value of the time. So this is the answer, and we can put the values of n as 1, 2, 3, 4 and so on in this expression, and we get the value accordingly. But if we see the different options, none of the option is matching. So in the CBSE board exam, everyone granted 1 marks for this particular problem because none of the answer is matching. So the answer is this, and you have to take any to get the answer, to get the marks, because none of the answers are matching here. So hope you understand the explanation. Now I am explaining it in Hindi. So यहाँ पे बताया गया है कि कॉइल है n टर्न की है, उसको प्लेस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में. मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है कॉइल के प्लेन से, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो एक साइनसोइडल मैनर में चेंज हो रहा है. वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है जिसका एक्सप्रेशन गिवन है b इक्वल्स टू बी नॉट कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी, जहाँ की कैपिटल टी टाइम पीरियड बताया गया है. ईएमएफ जो इंड्यूस होगा कॉइल में वो मैक्सिमम कब कब होगा, किन किन टाइम इंस्टेंट्स पे मैक्सिमम होगा. हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो इसके लिए जो कंसेप्ट यूज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, विच इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी. यहाँ पे इस फॉर्मूले में फाई की वैल्यू हम जानते हैं, फाई बराबर होता है बी डॉट ए, और बी और ए दोनों ही सेम डायरेक्शन में है. बी की डायरेक्शन दी गई है कॉइल के परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉइल या सरफेस के होता ही है. तो इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि दोनों बी और ए के बीच का एंगल होगा 0. सो कॉस जीरो इज 1 हमने पुट किया तो हमें फाई मिला बी ए हमने पुट किया इस एक्सप्रेशन में. अब इसमें एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, फिक्स है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं, डिफरेंशियल साइन से बाहर ले सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस एन ए. बी की वैल्यू को हमने इस एक्सप्रेशन से यहाँ पे पुट किया, बी नॉट कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी. इसमें भी बी नॉट कांस्टेंट है तो उसको भी हम पुल आउट कर सकते हैं फ्रॉम द डिफरेंशिएशन. फिर हमें डेरिवेटिव लेना है कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी. कैलकुलस के बेसिक रूल्स के हिसाब से आप जानते होंगे कि इस तरह के एक्सप्रेशंस का किस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है. यहाँ पे वो स्ट्रेट अवे कॉस टी का डिफरेंशिएशन नहीं है, टी का एक कोफिशिएंट भी है, तो पहले हम कॉस का डेरिवेटिव लेंगे जो कि माइनस साइन आता है, फिर उसके बाद हम टी का जो कोफिशिएंट है उसको भी हम पर्टिकुलरली डिफरेंशिएट करके लिखेंगे. तो ये बन के आएगा माइनस एन बी नॉट ए माइनस साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू 2 पाई बाय टी. दिस इज इंपॉर्टेंट.
अब यहाँ पे 2 पाई बाय कैपिटल टी एक कांस्टेंट है, इसको भी हम जो है एक्सप्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। इसको हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, तो ये जाएगा एन बी नॉट ए 2 पाई बाय कैपिटल टी एंड देन साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब यहाँ हमें एक जनरलाइज्ड वैल्यू बतानी है टी की, कि जिस अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स के लिए ये ईएमएफ मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक साइन फंक्शन है, ये अपनी सक्सेसिव नेक्स्ट वैल्यूज के लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो इसका जो कोफिशिएंट है ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, तो इन पे फोकस नहीं है, हमारा फोकस होगा इस साइन टर्म पे, क्योंकि यही वेरिएबल टर्म है और इस वेरिएबल टर्म में भी जो चीज वेरिएबल है वो है दिस टाइम स्मॉल टी। अब यहाँ पे स्मॉल टी की डिफरेंट वैल्यूज को हम पुट करके इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए हमें ये पता है, ये रूल हम जानते हैं कि साइन जो मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं उसकी या तो +1 या -1 होती हैं। +1 होता है लाइक 90 डिग्री एंगल, जिसे हम π/2 कह सकते हैं। देन 270 डिग्री एंगल, जिसको हम 3π/2 कह सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आएगा ऑड मल्टीपल में 5π/2 आएगा, तो जो कि फिर से +1 हो जाएगा, फिर 7π/2 आएगा, -1 हो जाएगा, इस तरह से आगे एंगल्स मिलते जाएंगे। अब इसको एक कॉम्पैक्ट या जनरलाइज फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2n-1 π/2। ऑड मल्टीपल को लिखने का ये मेथड है, 2n-1 π/2। इसको बराबर रख देना है हमें साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी के। दोनों तरफ कंपेयर किया हमने साइन को, तो जो इसके टर्म्स हैं वो हमने बराबर करके लिख लिए, 2 पाई बाय कैपिटल टी स्मॉल टी बराबर 2n-1 π/2। ये हमने इसके बराबर लिख लिया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल टी की वैल्यू निकल के आई हमारी 2n-1 कैपिटल टी बाय 4। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, जो किसी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ऑप्शन कोई भी मैच नहीं था, तो बोर्ड ने अवार्ड किया है हर स्टूडेंट को 1 मार्क। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।